We'll do very simple warm-ups and stretches that you can do sitting on a chair. So we're going to start sitting with your back straight. We'll just start warming up your head and your neck. So as you inhale, look up with your head. Exhale, look down. Inhale, look up. Exhale, down. Inhale, up. Exhale, down. Inhale, up. Exhale, down. Now slowly look straight and tilt your head to your right side. So tilt so that your ear is close to your shoulder. Come back center, tilt to your left. Tilt to your right. Tilt to your left. Tilt to your right. Tilt to your left. Tilt to your right. And tilt to your left. Slowly come back center. Now once again tilt to your right side and stay on your right side. You can keep your right hand on your head and pull your head closer towards your shoulder. Okay, come back to the center. We do the same thing on the left. So tilt to your left and keep your left hand on your head and pull your head closer towards your shoulder. And slowly come back center. Okay, you can keep your hands on your shoulders. We're going to start rotating your elbows going around. So first going to the back, keep breathing normally. And we'll slowly reverse, going the other way. And relax. Okay, you can stretch your hands in front of you, open your fingers wide, and we'll close and open, and close and open, and close, open, close, open, close, open, and stay closed. And let's rotate your wrist, making circles. And reverse, other way. Very nice. Slowly get your hands down. Now raise your right hand up and keep your left hand down. Right hand up, left hand down, and switch. Left hand up, right hand down, and switch. And switch. 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 Switch and switch. Two more times. Right hand up. Last time, left hand up, and relax. Now from here you're going to stretch both your hands out to the sides. Keep your fingers pointing up and we'll make small circles going 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. 5, 4, 3, 2, 1. Reverse again. 1, 2, 3, 4, 5. Last time. Reverse. 5, 4, 3, 2, 1, and get your hands down. Now once again raise your hands up, hold your fingers at the top, let your palms face up and stretch, stretch, stretch. Keep your back straight, keep stretching. Now look up with your head and look down. Once again look up and look down. Okay, slowly get your hands down. You're going to stretch your right hand in the front, only your right hand, and take your right hand to the side. Keep your left hand in front of your right and pull your hand. Keep your left hand in front like this and pull. Okay, on the other side, left hand up, right hand on the outside and pull. Okay,
slowly come back and relax. The next thing we are going to do is few twists and stretches for your spine. Okay, we are going to stretch to the side now. So, you are just going to go from side to side. You hold the chair if you want to, and you can slowly go to your right and to your left. So, as you exhale, you go to the side, inhale, you come center, exhale to the side, inhale to the center. Keep going one side at a time. Keep going from side to side with a gentle smile on your face. Keep going. So, exhale to the side, inhale, center. Exhale to the side, inhale, center. Exhale to the side. Last 2 times, to the side and center. Last time, going to the side and come back center. Now, from here, we are going to twist and look behind. So, you hold the chair behind you, slowly twist and look behind and come back to the center. Do the same thing on the other side. Twist and look behind, come back center. Again, twist, look behind you, come center, twist, look behind you, come center. 2 more times. Twist to the back, come center. 1 last time. Twist and come center. Okay, we are going to work on our legs now. So, you raise your right leg up, only 1 leg at a time. So, we will just point and flex your toes. So, you point and flex and point and flex and point, flex, point, flex, point and flex, point and flex and relax. Other leg, point and flex, point and flex, point and flex and point and flex, point, flex, point, last time and point and flex and relax. Okay. Right leg again, so you lift your right leg up and you flex your foot and we will just start kicking up slowly. So, sometimes when we are older, our knees tend to give up on us. So, we are doing these exercises to strengthen your thighs so that your knees will also get strong. So, we will just keep pushing it up and slowly come down, relax, we will do the other leg, flex your foot and push up. So, you keep your foot flexed and you keep pushing it up and relax. Okay, again right leg, flex your foot, you will make small circles. You want to try and keep your knee as straight as possible and reverse on the other side. And relax. Other leg, left leg up, flex your foot, small circles. And reverse. And relax. Raise both your legs up and get your legs down. Keep going. Raise both your legs up and down. Up and down. We will do 7 more. Up and down and 6 and down and 5 down, 4 and down and 3 down, 2 and down, last 1 and down. Relax. Shake your right leg out, shake, shake, shake. Shake your left leg out. Give your legs a good shake. Very good. And shake your hands out. Okay, and relax. We're going to do a few exercises for your face now. We finished working on your hands and your legs. We'll do some relaxing exercises for your face followed by a very simple pranayam. So, 4 fingers at the center of your forehead. Start massaging your forehead, going from the center down to the sides, from the center to the sides. Keep going. Now use your index finger and your thumb, place it on your eyebrow and start running your fingers from the center again to the side. From the center to the side, from the center to the side. Okay, taking your 4 fingers on the side of your forehead, massage in a circular motion.
and relax your cheekbones, going from your cheek to your chin, again going down from your cheek to your chin. And relax, grab hold of your ears and pull your ears down. And relax. नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। दायां अंगूठा दाईं नासिका द्वार पर, तर्जनी और मध्यमा भौं के बीच, अनामिका और कनिष्ठिका बाईं नासिका द्वार पर। दोनों नासिकाओं से सांस लें। अंगूठे से दाहिनी नासिका द्वार को बंद करें और बाईं से सांस छोड़ें। बाईं नासिका द्वार से सांस लें और बाईं नासिका द्वार को बंद करके दाईं से सांस छोड़ें। दाईं नासिका से सांस अंदर और बाईं से छोड़ें। अपनी लय से जारी रखें।
भस्त्रिका प्राणायाम हेतु तैयारी करें। दोनों हाथों को कोहनी से कंधों की ओर मोड़े, मुट्ठी बंद रखें। सांस अंदर लेते समय दोनों हाथ ऊपर उठेगा और मुट्ठी खुल जाएगी। सांस छोड़ते समय तेजी से दोनों हाथ नीचे की ओर ठीक पहली स्थिति में आ जाएगी और मुट्ठी बंद हो जाएगी। एक साधारण श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ दें। एक और साधारण श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर। भस्त्रिका के लिए साधारण सांस में ब्रीथ इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, इन 8, in 9, in 10, in 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10 and relax। विश्राम करें। पूरा ध्यान शरीर के भीतर बढ़ती हुई ऊर्जा पे रखें। Feel the energy in the body. Enjoy this moment with yourself. Let us complete our practice with Bhramari Pranayam, or the bee breath. To get ready, take a deep breath in and a deep breath out. Close your earlids with your thumbs. Place your index finger just above your eyebrows and rest your middle fingers over your eyes. We're going to inhale through the nose and breathe out, making a humming sound, Om. Let's get started. Inhale. Relax, placing your hands back on your knees, palms facing upwards. You can gently open your eyes with a feeling of love and gratitude for everything that we have, for this new day today. Namaste. ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः
हम जो 108 बार राम राम करते हैं उसको तालियों के साथ विद एक्सरसाइज के फॉर्म में उसको करेंगे। 108 बार का मतलब है 108 बार जब हम राम का नाम लेंगे तो करीब हम 11 यानी 10-10 बार एक तरीके की ताली बजाएंगे और करीब हम 11 तरह की ताली बजाएंगे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज में। तो शुरू करते हैं साथ में 108 बार राम नाम के साथ ताली के साथ एक्सरसाइजेस। राम राम एक राम राम दो राम राम तीन राम राम चार राम राम पाँच राम राम छः राम राम सात राम राम आठ राम राम नौ राम राम 10 राम राम 11 राम राम 12 राम राम 13 राम राम 14 राम राम 15 राम राम 16 राम राम 17 राम राम 18 राम राम 19 राम राम 20 राम राम 21 राम राम 22 राम राम 23 राम राम 24 राम राम 25 राम राम 26 राम राम 27 राम राम 28 राम राम 29 राम राम 30 राम राम 31 राम राम 32 राम राम 33 राम राम 34 राम राम 35 राम राम 36 राम राम 37 राम राम 38 राम राम 40 राम राम 40 राम राम 40 राम राम 42 राम राम 43 राम राम 44 राम राम 45 राम राम 46 राम राम 47 राम राम 48 राम राम 49 राम राम 50 राम राम 51 राम राम 52 राम राम 53 राम राम 54 राम राम 55 राम राम 56 राम राम 57 राम राम 58 राम राम 59 राम राम 60 राम राम 61 राम राम 62 राम राम 63 राम राम 64 राम राम 63 राम राम 64 राम राम 65 राम राम 65 राम राम 70 राम राम 70 राम राम 71 राम राम 72 राम राम 73 राम राम 74 राम राम 75 राम राम 76 राम राम 77 राम राम 78 राम राम 79 राम राम 80 राम राम 80 राम राम 82 राम राम 83 राम राम 83 राम राम 84 राम राम 83 राम राम 86 राम राम 87 राम राम 88 राम राम 89 राम राम 90 राम राम 91 राम राम 92 राम राम 93 राम राम 94 राम राम 95 राम राम 96 राम राम 97 राम राम 98 राम राम 99 राम राम 100 राम राम 101 राम राम 102 राम राम 103 राम राम 104 राम राम 105 राम राम 106 राम राम 107 राम राम 108। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे नारायण, आपका धन्यवाद है, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं, इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है, प्यार आदर सम्मान प्रशंसा जैकपॉट से भरा हुआ। हे नारायण, हमारे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है, और हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन, मौसम, यातायात, जन्म कुंडली, सभी कुछ हमारे अनुकूल है। हम भाग्यशाली हैं, हम कृपाशाली हैं, हम पर नारायण की असीम कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है।
नारायण आपका धन्यवाद है। हमारा घर सुख शांति समृद्धि से भरा हुआ है और पूरी तरह सुरक्षित है। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं, सफल हैं, सफल हैं। हम विचार वाणी व्यवहार से सकारात्मक हैं, सकारात्मक हैं, सकारात्मक हैं। हम सदैव सत्य बोलते हैं और सही मार्ग पर ही चलते हैं। हम हर व्यक्ति में नारायण के ही दर्शन करते हैं। हे नारायण आपका धन्यवाद है जीवन के साथों सुख देने के लिए। हे नारायण आपका धन्यवाद है आजीवन स्वस्थ रहने का वरदान देने के लिए। इसलिए हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। हमारा चित्त शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है। नारायण आपका धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है।